पक्षाचे नेते आमदार भास्कर जाधव आहेत ते पक्षात कुठे नाराज दिसत आहेत। उद्या चिपळूणमध्ये कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते आपली भूमिका मांडणार आहेत। उद्याचं उद्या पाहू। सर, दो सवाल है मेरे। सबसे पहले आपने खुद घोषित किया था कि महाविकास आघाड़ी की जो आज एक बैठक होने वाली थी, जहाँ पे प्रकाश आंबेडकर, मैंने आज की तारीख घोषित नहीं की थी। प्रकाश आंबेडकर जी 9 तारीख को जो प्रस्ताव के बारे में हमसे चर्चा करेंगे, ये सही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। अभी अभी मेरी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के इंचार्ज रमेश चंथियाला से बात हो गई, सुबह बाला साहेब थोराट जी से बात हो गई, शरद पवार साहब से निरंतर बातचीत चल रही है, प्रकाश आंबेडकर साहब से कम्युनिकेशन चल रहा है। 1-2 दिन में हम वापस बैठेंगे। आश्चर्य आहे, ज्या स्वाभिमानासाठी शिवसेना सोडली वगैरे असं म्हणतायत, हे तुमचे कोणते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, आणि दिल्लीत जाऊन भांडी घासावी लागतायत व्यापाऱ्यांची। 2-4 लोकसभेच्या जागांसाठी डुप्लिकेट शिवसेनेचं नशीब हेच आहे। शिवसेना जी आहे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालची, आम्ही 23 जागा सतत लढत होतो आणि 23 जागा लढू, पण जे डुप्लिकेट आहेत त्यांच्या वाट्याला 5 जागा येत नाहीत। 5 जागांचे तुकडे कुत्र्यापुढे हाडू फेकावा असे फेकल्याची बातमी मी वाचतो आहे। अजित पवारांना काय 2-4 जागांवरच बोलवण करतायत बरं का। डुप्लिकेट शिवसेना, डुप्लिकेट राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी जास्त अपेक्षा करू नये, त्यांचा अस्त जवळ आला आहे। थोडा जोर लावून ते तिकडे गेले होते, भाजप या पक्षामध्ये गेले होते। ते काय जोर लावणार व्यापाऱ्यांपुढे? त्या हिम्मत आहे जोर लावायची? जोर लावून दाखवावा, जोर लावून दाखवावा। आम्ही स्वाभिमानी होतो, आम्ही जोर लावून बाहेर पडलो स्वाभिमानासाठी। तुम्ही भांडी घासत बसा त्यांची। शिवसेना नाही, शिवसेना शाखेचं उद्घाटन करण्याची वाईट वेळ लोढाने करावी इतकी आमच्यावर आलेली नाही। शिंदे गटाची बोला, बरोबर ना? काय वेळ आलेली आहे की शिवसेना, डुप्लिकेट शिवसेना शाखेचे उद्घाटन करण्याची वेळ, त्यांच्यावर करून घेण्याची वेळ मंगल प्रभात लोढावर करून घेत आहेत। यातच सगळं आलं। मुंबई कोणाला विकतायत, मुंबई कशी विकतायत, शाखा कशा विकल्या जात आहेत उद्योगपतींना, व्यापाऱ्यांना, बिल्डरांना। जे बिल्डर त्यांच्या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्समध्ये मराठी माणसाला जागा द्यायला तयार नाहीत, त्यांच्याकडून हा शिंदे मिंदे गट त्यांच्या शाखेचं उद्घाटन करून घेतो। यापेक्षा मराठी माणसाचा अपमान तो कोणता? चला चला। आदित्य ठाकरे ने अरविंद सावंत ने महाविकास आघाड़ी जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव दिख रही है सीट शेयरिंग को लेकर, लेकिन इसी के साथ साथ एक लेटर कल बाहर आया था जहाँ पे वंचित सीधी तौर पे बोल रही है कि महाविकास आघाड़ी हमें ऐसी सीट दे रही है जहाँ पे हम चुन के नहीं आ सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लिस्ट हमारे पास वंचित बहुजन आघाड़ी के नेताओं ने दी थी कि ये सीट हम लड़ सकते हैं, लगभग हमने जो सीटें उनको ऑफर की है वो सीटें उनकी लिस्ट में है। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। प्रकाश आंबेडकर जी बड़े नेता है, हमारे प्रिय नेता है, हम उनको सब चाहते हैं, लड़ाऊ नेता है, उनकी भावना मैं समझ सकता हूं। कार्यकर्ताओं का दबाव होता है ज़्यादा सीटों के लिए, फिर भी हम उनका समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे और हमें चाहते हैं जो सीटें वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सदस्य के रूप में मिलेगी वो सब मिलकर हम जीत कर लाएंगे।